Okay, so hello everyone, this is Akshay here. Let us continue with today's GFG problem of the day. Today's question name is K-Pangrams. So, although this question is of easy category and has been asked in Zoho and Snapdeal, but this is a very important topic of the string, topic of a string place, right? So, similarly, there are things like anagrams, and today we'll see what is panagram, right? So, anagrams, we have already covered some questions on anagrams. You can see our string playlist. What panagram says is that it's a sentence with all of the letters, right? Any sentence which has the letters from A to Z, Z or Z, that would be considered as a panagram, right? And similarly, the anagram is a word formed by rearranging the letters. That is, if cat is a word, then ACT can also be a word forming arranging the words, arranging the letters, right? So these two are anagrams. Okay. So what is the first test case? The first test case is given as the quick brown frog comes over the lazy dog, right? So k equals to 0, that means the sentence contains all 26 characters, and that's already a panagram and return true, right? So what is the k here? So k, return true if the string can be changed into an at most k operations, else return false. Okay, so we have privilege of do k operations. At most k matlab less than equals to k operations we can do, right? A single operation consists of swapping. Okay, the operation which actually is the swapping of existing alphabet character with any other alphabetic character, right? So let us see the test case 2. So from the test case one, can we say that if I get the count of distinct characters, right? And if it is equals to 26, then I can say keep true, no problem is there, right? And if I get the count of distinct characters, right, I need to say that what are all the characters not present. So I can say that characters not present will be nothing but 26 minus count of distinct characters, you can say. Let's say this is x, 26 minus x. So this would be the count of the characters which are not present. And we can make these characters present in our string by this k operation. So let's say if this value comes out to be, let's say some y, so this y should be less than equals to k, right? Because these many swaps we can do. So if I want to do y swaps, then definitely उससे ज़्यादा swaps मेरे पास होने चाहिए. Like should be equals to y, or like should be equals to or greater than swaps हमारे पास होना चाहिए, right? तो ये तो हो गया दो point that we will remember while writing the code, right? And count out distinct characters, or let's say the frequency of distinct characters, सबसे best तरीका क्या होता है? या तो hash map बना लो आप, right? Or we can, since is 26 characters are involved here, so we can make an array of 26 size and we can map the first character A here and the last character at the last position. वो कैसे करेंगे? We'll see in the code. But we have already done that multiple times. सेकंड टेस्ट केस देखते हैं, यहाँ से कुछ हमें पता चलेगा एक नई चीज़. टेस्ट केस 2 में क्या दे रखा है कि द वैल्यू इज़ ट्रू. हाउ कम दैट द वर्ड कंटेन्स 26 एंड यहाँ पे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर सिर्फ ए है, राइट? तो अगर ए को पढ़ा तो बचे स्पेसेस क्या हुए? 25 स्पेसेस, राइट? एंड के इज ऑल्सो 25. तो इतने स्वैप्स करके हम नए डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स ला सकते हैं. दैट इज वन वुड बी ए, another B, C, D till Z, and then you can say that this particular, after doing the 25 swaps in this particular string, ये पैराग्राम बन चुका है, right? And we can say true. But what if in some string you do not have the space of 26 character? मतलब कि हमारा जो string length है, str length है, वो itself less than 26 हो जाए, right? तो हम क्या कहेंगे उस केस में? हमारे पास k की वैल्यू कुछ भी हो, इन्फिनिटी ही क्यों ना हो, हमारे पास जगह ही नहीं है, तो हम स्वैप कैसे करेंगे, right? We do not have space to swap with the some other characters to make this particular string as panagram, right? If string length is less than 26, or let's say the count of distinct characters, we will see in the code, right? The character count must be greater than equals to 26, right? अगर ऐसा है, then only we can use this k thing and we can swap it, right? So let us jump back to the code now and we will see the things in action, right? So हम यहाँ पे दो चीज़ें बना लेते हैं. int character count. So let me zoom a bit. Int character count is equals to 0, and we will make a frequency array. Instead of using a hash map, we can make a frequency array. आप hash map भी बना सकते हो, key value pair, that is string comma integer, and new array, and let us give this size as 26. Now we will iterate in this particular string, right? तो string में हम iteration करने के लिए character by character हमें उससे क्या array में convert करना होगा in Java, right? C++ में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, but since we are coding in Java तो वो भी करते हैं, and let me do that.
ठीक है, so now using this for loop we can iterate in the string character by character, and we saw that the sentences have empty spaces in between as well, right? तो हमें empty space को consider नहीं करना है, so we'll just say if character is equals to empty space. I'll just say continue, continue, and else if that is not the case, then definitely we have a character which resides in range A to Z, right? In that case we will store that frequency, that is frequency of ch plus plus. अब हम इसे कैसे देखो, सी एच की वैल्यू क्या हो सकती है, लेट्स से जेड भी हो सकता है, बट हाउ डू वी मैप इट टू द लास्ट इंडेक्स ऑफ एरर, राइट? हम एक सिंपल सा यहाँ पे माइनस ए कर देंगे। यहाँ पे होगा क्या कि द एस का वैल्यू वुड बी सब्ट्रैक्टेड एंड विल गेट द वैल्यू। सो लेट्स से यू हैव द कैरेक्टर, योर फर्स्ट कैरेक्टर एज ए, राइट? इसका एस का वैल्यू शायद 69 होता है और 65, आई डोंट नो, बट व्हाटएवर बी द केस, लेट्स से 69 65 होता है, लेट्स से। सो इफ आई डू अ माइनस ए, राइट, देन 65 and 65 will give you 0, and that is how our a will be mapped to our 0 index, and similarly for rest of the characters, so on and so forth. We'll have the frequency here, and we need the character count as well, right? So character count plus plus as well, right? At the last, what we need to check, we just need to check that if my character count should be must be greater than 26, then only then only we can use the swaps first of all, right? So character count should be greater than 26, and now we also need to find that how many characters are missing, right? सो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है, जहाँ पे भी वैल्यू 0 हो, दैट मीन्स वो कैरेक्टर कभी भी वी नेवर एनकाउंटर दैट कैरेक्टर इन अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग, सो वी विल यूज़ one more for loop here, that is for, let me write that. Yep. So this count is nothing for the characters not present, right? Or let's say the letters not present from A to Z. So I'll get the count of the letters that is not present in the string. And we'll just check that if this count should be these many number of swaps we require, right? So it should be what to say, less than equals to k, right? K could be greater than my swaps as well, but इसकी equal तो होना ही चाहिए. So we'll just return this, and we will we will compile this code. Okay, so as you can see, the expected and our output matches. एक छोटी सी गलती थी यहाँ पे, हमने यहाँ पे int arr लिख दिया था, that is syntactically wrong, so we just replace that arr with the int, and that is it. Let us hit the submit button for this code. तो ये कोड हो गया सबमिट यार, ऑल्दो ये क्वेश्चन ईज़ी था, बट ये एक स्टैंडर्ड व्हाट इज़ इट टॉपिक है स्ट्रिंग का। तो देखो और देखिए ये क्वेश्चन तो हो गया यार, कुछ एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं सबसे पहले तो कि व्हाट एल्स, मैं डेली पीओटीडी वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइम कंस्ट्रेंट का है, राइट? एंड and I'm specifically making for the questions which are actually very standard or would be part of our, let's say, DSA sheet, जो करना बहुत ही ज़रूरी है, राइट? तो आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए लीड कोड प्रिपरेशन जो हमने प्लेस बनाया आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। एंड मूविंग फॉरवर्ड इन आर प्योरिटी स्ट्रीक, आई ट्राई टू मेक वीडियोज़ एवरी डे, क्योंकि क्वेश्चन मैं सॉल्व तो करता हूँ यार, बस टाइम दे पाता हूँ कि वीडियो शूट कर सकूँ, राइट? बट ठीक है, बट अगर अगर ऐसा कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, राइट, तो डेफिनेटली शूट करूँगा। एंड रेस्ट ऑफ द डेज वी विल सी कि आई क्या करना है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, एंड मचाते रहो। एक क्लास बाद, सो रिगार्डिंग दैट रेफरल, जहाँ पे 0+CS का ओपनिंग था, तो मैंने बहुत लोग को रेफ़र किया, राइट? नहीं भी तो मैंने 45 प्लस लोग मैं रेफ़र किया, मतलब जितनों ने भेजा मैंने सबको कर दिया है, इर्रेस्पेक्टिव कि उनके रिज़्यूमे में डीएसए था और 2023 और 2024 बैच के थे वो, राइट? रेस्ट ऑल द बैचेज़ वर इनएलिजिबल, राइट? तो आई होप आपको इंटरव्यू लिंक आया होगा, आया है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता देना। कुछ लोग को पता चला कि उनको रिजेक्शन मेल भी आ गया है, बट फिल्ट्रेशन है वो मेरे हाथ में नहीं है, वो एचआर के हाथ में। बट हाँ, जिनका मेल आया है, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट, और कैसा गया इंटरव्यू भी बता सकते हो, आइदर हियर लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, एनीवेयर। सो टिल देन बाय बाय यार, मिलते हैं कल के ट्यूटोरियल।